Okay, the recording has been started. So, Bismillah Rahmanir Rahim. Just a review from the previous topic is just a review. So, this was example. This was lecture 27, power electronics, inverter circuit and waveforms. So, what we have seen in this slides, we have drawn the inverter circuits, and we have plotted these waveforms. And so mainly we will try to understand the operation of the circuit by having equivalent circuits, and then based on this knowledge we will draw the output waveforms. We will not try to focus on the mathematics too much, but maybe a bit we will touch some examples from the book so that you can have better understanding. Numerically you can have better understanding, but the better understanding, what I understand is you should understand completely, clearly, transparently the operation of the inverter circuit and the waveform. The mathematics is later on. Is mathematics, I should not say it's not very important, but the understanding is very important. Mathematics is built after your understanding. Remember, mathematics is the result of something your concept. So the most important is the understanding of the inverter circuit and its waveform, and then we will touch some. Okay, the last time we just we have to go fast. We have given you the definition of the inverter, and we try to convince you what is the inverter circuit. So I said you, this is the inverter circuit. Oh my God, this is very simple circuit. And what is inside this circuit? Yes, this is truly, absolutely an inverter circuit. What we are doing in this circuit, we just have connected a DC voltage. Let's suppose you can have plus 12 volt or plus 100 volt DC voltage. And what you did, you just have step plus, you connected a plus wire here and the same plus wire at the other point. And from the negative, you connected the negative point. And so this is what I'm claiming, this is the inverter circuit. And now, because you build this inverter circuit, so next what you have to do, if you have inverter circuit, then the next you have to connect the load. आप इसको लैंप कनेक्ट कर दे, LED कनेक्ट कर दे, whatever you want to connect a DC motor. Let's suppose if you connect a DC motor, so the inverter will function, because this, what we are saying, this is an inverter. What the next thing is, you have to connect a load, and this is important, that the inverter circuit itself is a simple circuit, but the configuration of the load, the connection of the load with different switch configurations are important. So what we have to understand is the controlling of the switching transistors. So by just taking this numerical, this manual example, so if we connect this load in this way, so this terminal will be plus and this terminal will be minus, and the load, the left side load is positive voltage in this case. So what we try to furnish the terminals. So this is terminal 1 and it is plus, and this is terminal 2, this will be minus. And the output voltage is, so the output voltage is always try to measure by taking T1 as a reference. You can also take T2, but normally T2 is not taken, normally T1. So always try to write the terminals of the load. You can write this one T1, this one T2. If this is T1, so the voltage will be measured while having this point as a reference point. So if we connect the multimeter plus here, so you will have a plus voltage. Okay. So hopefully, and this is the second configuration of the switch. If this switch is connected, it is exchange its positions. Switch 1 becomes lower. Switch 2 now connected at the
upper point. So in this case, what will happen? So in this case, you can see the T1, again the reference point of the voltage measurement is connected with minus, and so this voltage will be minus voltage. So what we get from a single DC supply voltage, we are getting, once we are getting the plus output voltage, and second we are getting the minus output voltage. The efforts are done on the operation of the switch. The load is also fixed. So this is the important thing you have to understand here, how the switch can be changed from this point to this point, from this point to this point. So this is basically the game of the controlling of the switches. Okay, so for example, the things, for example, if you want, basically I have shown you in the reverse order. First I have drawn the low inverter and the load, and then the table, and then the waveform. But in actual, when you will try to design a inverter circuit, first you will draw this. Okay, I want to get from this DC supply this kind of AC voltage or AC current or the AC supply. तो पहले तो आप ये करेंगे कि आप पहले ये ड्रॉ करेंगे, and you will say, okay, I want to have this square wave that jumps from plus to minus, so I can get alternating current, I can get AC square wave. मुझे ये चाहिए. आपको ये डिजाइन करने के लिए what you will do, first you will make this table. State 1 plus, दो ही स्टेट है, प्लस है माइनस है, प्लस है फिर माइनस. So you will take this table, you will, by having this table, you will try to make a controlling circuit to turn on the transistors or the SCRs or the switches. So the state 1 plus, because so this is plus, so the output voltage is plus. So this is the things, these are the very simple thing, and don't take it very serious. These are just simple, and now it's not, it's a well-known technique. So hopefully you understand now. So मैंने आपको क्या बताया? Let's suppose this is आपके पास, let's suppose now I'm telling you in the reverse order. For example, reverse order में आपको बता रहा हूँ. For example, आपसे कोई कह रहा है कि मुझे DC वोल्टेज मेरे पास मौजूद है 100 वोल्ट. I want from this volt, I want to have an alternating AC voltage, and the shape of the AC voltage should be like this one. आपको उसने वेवफॉर्म बता दिया, या आप ये चाहते हैं कि आप एक इन्वर्टर डिजाइन करना चाहते हैं जिसमें उसकी जो इन्वर्टर की जो आउटपुट है वो ये, दिस इज योर आउटपुट. यू विल फर्स्ट टारगेट द आउटपुट के मुझे आउटपुट किस तरह की चाहिए. तो आपने ये आउटपुट ड्रॉ कर लिया. अब इसके बाद सेकंड क्या करेंगे, यू हैव टू मेक द ट्रुथ टेबल फॉर दिस वन. तो आप ये टेबल बना करके बनाएंगे. सो व्हाट you will first make this state 1. So I have written state 1. State 1 प्लस होगा माइनस होगा, आउटपुट कितनी होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए, आउटपुट इज प्लस. स्टेट 2 में आउटपुट इज 0. स्टेट 2 में आउटपुट 0. and how the output can become 0 if both the S1 and S2 is connected the negative. इसे भी आप यहाँ कर लें, इसे भी यहाँ कर लें. So there is no potential difference, as we already have discussed these things. So पहले आप ये ड्रॉ करेंगे, आपको ये चाहिए, उसके बेस पे आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे, and then you have to make the circuit. And then we give you some examples from the book, and please remember, ये मुझे बताएं, अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस किया था. If someone of you can tell me if this is a half bridge inverter or a full bridge inverter, मुझे कोई बताए. It's a full bridge rectifier.
अच्छा, पहले तो ये बताएं कि ये इन्वर्टर है या रेक्टिफायर है। इन्वर्ट द फंक्शन ऑफ द इन्वर्टर क्या करता है कि डीसी से एसी में कन्वर्ट कर रहा होता है, और रेक्टिफायर क्या कर रहा होता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो द इनपुट वी हैव डीसी, और इस अगर ये स्विच ऑन होगा, इफ दिस स्विच इज ऑन, तो करंट कैसे फ्लो होगा, प्लस, इस तरह करंट फ्लो हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएंगे, यहाँ पर इस जगह पे प्लस वोल्टेज आ जाएंगे, ठीक है। और जब ये ऑफ हो जाएगा एंड दिस विल टर्न ऑन, जब ये टर्न ऑन होगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट किस तरफ फ्लो करेगा, प्लस से ये इस तरफ। अब इस जगह प्लस आ गई, तो इसका मतलब ये होगा, पहले यहाँ पे प्लस थी, अब यहाँ पर प्लस है, तो इसका मतलब द आउटपुट इज एन ऑल्टरनेटिंग alternating voltage, output is an alternating voltage, alternating current, ठीक है। So output is basically an AC. So जब आउटपुट AC होगी तो इसका मतलब है ये क्या है, is an inverter. Now the time is to tell to understand कि if this is a half bridge or the full bridge. So half bridge में, as we know from the very beginning, the half bridge में सिर्फ we use the two switches T1 and T2, और full bridge में 4 switches इस्तेमाल करते हैं, as we are familiar with the full bridge rectifier. In the full bridge rectifier, we use D1, D2, D3, D4. So this is simple understanding that this is a half bridge inverter. पहले तो आपको बताना पड़ेगा ये इन्वर्टर है या ये रेक्टिफायर है, उसके बाद फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये इन्वर्टर है, फिर आप ये बताएंगे कि यह फुल ब्रिज है या हाफ ब्रिज। यू विल टेल दैट दिस इज अ हाफ ब्रिज because we are using two switching devices, transistors or SCRs. ठीक है, ये तो this is confirmed that this is a half bridge. And I also explain you कि जब whenever we have a switch that is operated at DC voltage, so this is a switch. जब भी कभी कोई स्विच होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई इवन आपके पास कॉइल भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये कॉइल है और इस कॉइल पे आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने 12 वोल्ट कनेक्ट किया है, ऑफ कोर्स दिस इज माइनस, ठीक है। सो दिस कॉइल विल एनर्जाइज, वी मस्ट नीड टू कनेक्ट अ free will diode in the reverse polarity. ठीक है, you are familiar with this one, and because you're in, so this is always required. तो ये how this works, because ये आपके पास एक रिले की कॉइल है, एंड रिले की कॉइल आप इसे ऑन कर रहे हैं ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। जब ये ऑन करेंगे तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, जब ये ऑफ करेंगे तो इस स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करने के लिए वी मस्ट नीड दिस फ्री व्हीलिंग डायोड, ओके। सो सिमिलरली is किसी भी kind का switch, for example if you have this switch, for example if you have this mechanical switch right now, and this mechanical switch is operated at DC, ये आपके पास condition है कि free wheel diode will always use when the device is operated at DC source, with DC source. So ये आपके पास एक switch है, ठीक है ना, एंड इस स्विच में आपके पास जो है ना ये लेट्स सपोज स्विच है, तो ये आपके पास डीसी पे ऑपरेट हो रही है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू मस्ट हैव टू कनेक्ट अ फ्री व्हील डायोड। ये मैंने आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में बता चुका हूँ काफी डिटेल, आई थिंक, आई डोंट नो, ओके मे बी थर्ड सेमेस्टर में कुछ और पढ़ा होगा। ओके, सो दिस इज द, आई होप यू अंडरस्टैंड, this is an additional diode that is not
going to decide the operation of the circuit, but this is used across any switch. And if the switch is operated at a DC voltage, then this is always connected with reverse bias. ये reverse bias में यहाँ पे plus supply है, लेकिन this is reverse bias. यहाँ पे plus supply है, but the anode, but the cathode is in this direction, right? So similarly, these are also the switch. So we must have to connect. इस switch के cross हमने एक diode. It's look like a freewheeling diode. ये diode है. ये diode का cathode किसके साथ connected है? Plus के साथ. So it is in the reverse bias. And similarly this one. So the D1 and D2 is used as a, what I should say, I should not say, but I have to say that D1 is used as a freewheel diode for this thyristor T1, and T2 is used as a freewheel diode for this thyristor T2. Okay, but this इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये full bridge बन गया. Understand? This is not a full bridge active inverter. This is, ये तो फ्री व्हील डायोड है ना, ये तो आपके पास फ्री व्हील डायोड है. आप ये करें, इसको इग्नोर कर दें. अब आपने इग्नोर कर दिया तो फ्री व्हील डायोड है. अब आपके पास क्या चीज बची है? तो अब नाउ यू कैन सी दिस इज जस्ट अ हाफ ब्रिज रेक्टिफायर, राइट? अस्सलाम वालेकुम सर, एक सवाल था. हाँ जी सर सवाल ये है कि ये हाफ ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर है ना, कि जो एसी की फुल वेव है वो कंज्यूम कर रहा है ना? दिस इज बेसिकली नहीं, ये एक्चुअली देखो, अगर हम रेक्टिफायर ले रहे हैं ना, रेक्टिफायर में जो एसी है ना, रेक्टिफायर के एसी में क्या हो रहा है कि हाफ ब्रिज ले रहे हैं, तो वो हाफ जो पॉजिटिव साइकिल वो ले रहा होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल को वो इग्नोर कर रहा होता है. ठीक है ना? इस वजह से जो आउटपुट पावर आती है वो हाफ होती है, एवरेज आउटपुट पावर. लेकिन फुल ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे तो एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी लेता है और नेगेटिव हाफ साइकिल को भी लेता है. दैट्स व्हाई सिंपल फुल ब्रिज रेक्टिफायर. तो हम यहाँ पर तो डीसी इस्तेमाल कर रहे हैं. एंड यू विल सून, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज हाफ ब्रिज रेक्टिफायर एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ द रेक्टिफायर्स. रेक्टिफायर्स में दो डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं for the half bridge rectifier, and 4 devices we use for the full bridge rectifier. Similarly here the same thing is applied. क्योंकि यहाँ पर तो AC है नहीं, तो we cannot say that half, but what we can say that यहाँ पर दो devices इस्तेमाल हो रहे, तो this is half bridge inverter, and if you use 4 this will become full bridge inverter, right? So now soon we will see the full bridge inverter. मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अभी मैंने सेक्शन ए वालों की क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस किया, बेसिक चीजें, तो वो शायद वो थोड़े से कंफ्यूज हैं. सो आई थॉट कि व्हाई शुड नॉट आई एक्सप्लेन इट क्लियरली टू यू. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट. तो हम लोग कहाँ तक थे? So the half bridge is regarding the power utilization. Half bridge में half power utilize होती है and full bridge में full power utilize होती है. So we have seen this one and we just explained this one. This is the inverter, but the rest of the thing, the diode is always the pre-wheel diode. You can, if you are getting confused कि यार ये क्या है, ये full है या half है, आप इसे ignore कर सकते हैं. And you will decide, okay, this is just the half bridge inverter. Yes, now this is the, now if I ask if this is the half bridge or the full bridge, so you can see that this T1 and this diode is associated with T1 in the reverse bias, so this is freewheel diode. So how many controlling devices we have? T1, T2, T3, and T4. So this is the single phase full bridge inverter, right?
we are utilizing full power. The DC full power to convert the AC power. So, and in this case, the waveform is IG1, IG2. So what it says, how many thyristors we have, T1, T2, T3, and T4. So the gate of the thyristor T1 is G1, gate of the thyristor T2 is G2. So the G1, what it says here, कि G1 और G2 एक ही time पे operate कर रहे हैं, so that the current path will establish. If T1 or T2 एक ही time पे operate कर रहे हैं, so how the current will flow? I just mark it. I just make a pen. So अगर ये T1 on है, इसका मतलब क्या हो गया? ये short circuit हो गई, ठीक है? As this says. इसी तरह से this says कि IG2 पे भी हमने इस गेट पे भी हमने सिग्नल दिया है, तो दिस assume के ये भी ऑन हो गए, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गई, ये शॉर्ट सर्किट हो गया. नाउ हाउ द करंट विल फ्लो, एक्सक्यूज मी, दिस इज प्लस, करंट यहाँ से फ्लो होगा, ये यहाँ से शॉर्ट सर्किट है, करंट यहाँ से फ्लो होकर इस जगह जाएगा, लोड पे जाएगा, एंड लोड से ये करंट, ये शॉर्ट सर्किट है, यहाँ से होते हुए ये go back. So this is the path of the current, and because the load, so this the load का जो ये side है, the left side of the load is plus, so the output is plus. ठीक है, यानी कि the left side of the load is known as A, and the right side of the load is B. So terminal A is considered as a reference point for the voltage measurement. तो A reference point है, A पे आप मीटर की रेड लीड लगाएंगे, so you will have positive voltage. So output is positive, this one. ठीक, and now अब हमने क्या किया, इसके बाद IG1 और IG2 पे जो सिग्नल है वो हमने जीरो कर दिए, ठीक है. अब IG3 और IG4 पे सिग्नल हम प्रोवाइड कर रहे हैं. वेयर इज IG3 3 एंड 4 पे हमने सिग्नल प्रोवाइड किया है. सो नाउ द करंट पाथ इस तरह बन जाएगा. मैं इसको पहले डिलीट कर दूं, सो आई विल मेक, so now for this one, so IG3 and IG4 is on, means T3 on है, इसे आप शॉर्ट सर्किट करते हैं, और T4 भी ऑन, इसे आप शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं. ये कनेक्ट, तो हाउ द करंट विल फ्लो, लेट्स सी. प्लस यहाँ से स्टार्ट हुआ करंट, ये करंट ऐसे फ्लो होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये ऑफ है. क्या करंट इस तरह फ्लो होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस है. सो द करंट विल ओनली फ्लो फ्रॉम दिस वन. क्या करंट ऐसे फ्लो होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस है. So the current will flow यहाँ से, ये load, and then this one, sorry, oh बस करो यार. So current will go to the negative direction, the negative terminal. So in this case now the terminal B is positive, ठीक है, और terminal A is negative. क्योंकि ये B क्यों पॉजिटिव है? ये प्लस है, प्लस इसके साथ कनेक्टेड है, तो प्लस है, तो यहाँ पर अब टर्मिनल B प्लस हो गया, पहले टर्मिनल A प्लस था, तो नाउ द वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज यही है, यहाँ से आप रखेंगे तो आपको ये वोल्टेज माइनस में मिल जाएगा. सो द आउटपुट वोल्टेज इज दिस वन, माइनस सप्लाई वोल्टेज, राइट, एंड द थिंग्स विल रिपीट इटसेल्फ. होप यू अंडरस्टैंड. और अब आप ये देखें, द थायरिस्टर is normally we not use thyristor for the small, unless we need a very high power industrial, up to industry level high power, then we should use the thyristors. Otherwise we should use the IGBTs, or for if
or where the frequency is not essentially required, very high frequency, then we can use the BNP transistors, B and B नहीं, BJT transistor, bipolar junction transistor, NPN transistor. So this is the equivalent circuit, the same circuit. If you have any question, you can ask. Otherwise, I have to continue now. Operation of half bridge inverter with resistive load. This is again the same. Now look this circuit. What I am claiming, this circuit is an inverter circuit. Why? Okay. In this case, you can also leave this one. You can also, sorry. यहाँ पर क्या है? ये आपके पास main supply है. And this main supply, for example, 100 volt या 200 volt है. If suppose this is 200 volt, तो आपने क्या किया यहाँ पर इसके साथ दो कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए. सिंपल. तो दो लोड हो गए. लेट सपोज एक एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट 2 है. सो ऐसे ही जैसे आपने दो रजिस्टर लगा दिए, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दिया, एक रजिस्टर लगा दिया. अगर 200 वोल्ट है तो इस और बोथ द रजिस्टर्स आर सेम, बोथ द कैपेसिटर्स आर सेम. ये लोड है बेसिकली. तो इट्स नॉट लोड, इट्स द पार्ट ऑफ द सर्किट. तो यहाँ पर वोल्टेज कितने होंगे? अगर प्लस 200 है तो यहाँ पर कितने वोल्टेज हो जाएंगे? 100 वोल्ट जाएंगे. यहाँ पर भी 100 वोल्ट, बिकॉज दीज टू आर डिवाइडिंग द मेन वोल्टेज. So basically, in order to get 100 here, we need this. आप अगर चाहें तो इसको भी आप यहाँ से remove कर सकते हैं. We don't need this one. आप just direct start करें यहाँ से. And maybe you can find some other books. They started from this point directly. ये तो सिर्फ बताया गया है कि ये C और C ये half of the voltage कहाँ से आए हैं. So this is from this main supply. If this is the VS supply, or if this is the 200 volt, the 100 volt will be across this capacitor, 100 volt voltage will be across this capacitor. If this is VS, so this will be VS by 2 and this will be VS by 2. So this is an inverter circuit, and अब आप क्या करेंगे? इसको use करना चाह रहे हैं, you have to connect a resistive load. So this operation is especially for the resistive load. R and is also, I think, similar to the previous. वही चीजें हैं मेरे ख्याल में. यहाँ पर सर्किट ऑपरेशन को a little bit more explain कि पहले स्टेप में S1 ऑन है, S2 को ऑफ कर दिया गया है. और जब S1 ऑन है, S2 ऑफ है, तो करंट किस तरह फ्लो होगा? करंट विल फ्लो फ्रॉम प्लस टू S1. क्या करंट यहाँ फ्लो होगा? नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स बायस है. So the current will find its path from this source. So this is the source of the supply. ये 100 वोल्ट यहाँ पर है, 100 वोल्ट यहाँ पर है. So this supply will allow the flow of the current from this plus through this SCR, so through this switch, IGBT switch S1, and via load, it will back to the negative terminal of the DC supply. So in this case, this T1 will become plus, because this is connected with the plus, and this T2 will become minus. Now, for the second operation, यहाँ पर हमने इसे ऑन किया था, इसे ऑफ किया है. अब आप रिवर्स कर लें, इस वाले को आपने ऑफ कर दिया, और this is on. So the current will flow. जब ये ऑफ है तो ये सर्किट डिस्कनेक्ट हो गई, ये वाली. So only the circuit intact is this one, क्योंकि ये ऑन है. So how the current will flow? ये ऑन है. अभी करंट देखें, ये this is your source of supply, 100 volt. So current will flow from plus to the collector to emitter, and then back to the source. So the current, in this case, the current direction is, you can say, because this is plus terminal, so this will be plus, and you can observe here the polarity of the voltage was plus minus here, and here minus plus. So the voltage is, each time the voltage is opposite with each other. If this is positive,
then this is negative. If this is negative, then this is positive. So the यहाँ पर भी वही वेव फॉर्म है. Hope you understand. So यहाँ पर सिग्नल S1 पे अलग से सिग्नल दिया है, सिग्नल S2 पे ये दिया है इन्होंने, सिग्नल S1, सिग्नल S2 एंड वोल्टेज अक्रॉस R. लोड के क्रॉस वोल्टेज कितने होंगे? जब S1 ऑन होगा तो लोड के क्रॉस वोल्टेज प्लस होंगे, जब S2 ऑन होगा तो ये S2 ऑन है तो लोड के क्रॉस वोल्टेज माइनस है. एंड द करंट थ्रू S1. What is current through S1? Remember, current through S1 means ये वाला, ये जब ऑन है इस फेज में, आप देखें इस फेज में करंट थ्रू S1 क्या होगा? करंट थ्रू S1 means current through this IGBT. So is this switch? The current will only flow through the switch when the switch is on. That's simple. It's very simple. It looks, if you look first time, it looks very complicated. How I can draw this waveform and how the direction, it looks very complicated. But if you really understand, nothing is complicated. So switch S1, the current will only flow through S1 when S1 is on. ठीक है, तो S1 यहाँ पर ऑन था, करंट यहाँ फ्लो हो रहा है. S1 यहाँ पर ऑफ हो गया है, करंट F1 ऑफ है. S1 दोबारा ऑन हुआ, S1 is there. Similarly, current through S2 will only exist when S2 is conducting, when S2 conducts. So S2 यहाँ पर, सॉरी, S2 यहाँ पर कंडक्ट कर रहा है, S2 की वैल्यू यहाँ पर current will exist. Hope you understand. Okay, one more thing. I think this I also explained previously. If you consider the phase difference, यार मुझे लगता है मैंने सारी चीजें रिपीट कर दी हैं. And consider this one. Okay, it's not a bad thing to repeat the things because the next item is really complicated. So it's good to review again and again. So these two waveform is basically across and through the load. This is the load voltage, okay, and this is the current through the load or resistor. So both are in phase. ये plus में है तो ये भी plus में. At the same time, if it stops at this point, तो current भी यहाँ पे stop हो जाता है. If it starts at this point, so both are in phase. They are completely synchronized. Why they are completely synchronized? Because the load is resistive. ठीक है, लोड रेजिस्टिव है तो ये रेजिस्टर अपने अंदर किसी भी किस्म के वोल्टेज या करंट या एनर्जी या पावर स्टोर नहीं करता. इट्स अ नॉन स्टोरिंग डिवाइस. जब स्टोर कोई चीज नहीं करता तो देयर विल बी नो फेज डिफरेंस. So when the load is resistive, so there will be no phase difference in between the voltage across the load and the current through the load. All are identical. Hope you understand. If you have any question, ask me. Yes, this is new. But before going this, I must have to take attendance, please. Attendance for the first half. So please now ready to respond me.
Muhammad Rizwan. Present, sir. Ahmed. Present. Muhammad Zahir. Present, sir. Amna Imran. Talia Amir. Present, sir. Natasha Rao. Present, sir. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Muhammad Faraz. Sorry, Muhammad Fahad Imtiaz. Present, sir. मोहम्मद अली है 056 मोहम्मद अली है मोहम्मद अली नहीं है मोहम्मद रिजवान मौजूद है सही है ओके मोहम्मद अली इज एब्सेंट मोहम्मद फहद इम्तियाज प्रेजेंट शाहिद राव Present, sir. तनवीर खालिद Yes, sir. Present. अक्सा शफकत Present, sir. अब्दुल्ला आसिफ Present, sir. अब्दुल्ला सिद्दीकी Present, sir. अब्दुल्ला सिद्दीकी Present, sir. ओके मोहम्मद उमर कासिम अफरा सयाब Present, sir. शहरियार खान Present, sir. शारिक रहमान शारिक रहमान फारिया अशरफ Present, sir. फारिया मोहम्मद एजाज Present, sir. समन अब्बासी Present, sir. रेहान अहमद Present, sir. आफिया शाहिद उन्होंने हैंड रेज करा हुआ है. अच्छा ठीक है अजीम आजम तारड़ so the absentees names are आमना इमरान अगर ये लोग आ गए तो मुझे दोबारा बताएं so that I can mark them then present so आमना इमरान ये मैं name of the absentees किसी Right, sir. the absentees name are आमना इमरान मोहम्मद अली शारिक रहमान and अजीम आजम तारड़ सर अजीम ऑनलाइन था उसका अभी अटेंडेंस के वक्त ऑफलाइन हुआ नेट इशू कर रहा था. अच्छा ठीक है चले सही है ओके सो we will have to start now then उनकी अभी लाइट चली गई. वो अभी क्लास में ही थी. okay so we have to start now बस क्लास अटेंड कर लें यार so now next sorry ये मैं शायद I think I need to share it so lecture 28 again the power electronics inverter and circuit waveform something more so please be patient be attentive these are very simple things it's nothing complicated but looks complicated so what is this now I'm asking is this a full bridge inverter or half bridge inverter can anyone reply me Half bridge inverter. bilkul sahi hai thank you okay so now this is example 10.1 so it's a bit mathematical the single phase half bridge this is example 10.1 from Ashfaq Ahmad the single phase half bridge inverter produce a step wave output अच्छा ये कह रहे हैं
इसकी जो आउटपुट है वो स्क्वायर वेव नहीं है, इज ए स्टेप वेव आउटपुट अक्रॉस रेजिस्टिव लोड। सप्लाई इन्होंने E100 दिया हुआ है ना, 100 वोल्ट यहाँ है। ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो 100 वोल्ट। ड्यूटी साइकिल इज 50% एंड अगर ड्यूटी साइकिल 50% तो एवरेज कितना होगा? Average we will make we will multiply it by 0.5 and load resistor is 1 ohm. Definitely this is something very special load which has only 1 ohm resistance and it's a very high, very heavy load. Load पे जितना resistance कम होगा, the more it will draw more current. So if we say the load is very heavy, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो रेजिस्टेंस है बहुत कम है। जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा, in rush current, very heavy current will start to flow. That means the load is very heavy. So if you see this one resistance is 1 ohm, then you can create an image in your mind okay, the load is looking very heavy. Okay, and is only resistive load, probably it can be heater. So आपको क्या करना है? प्लॉट वेव फॉर्म करना है। अच्छा, एज पर टेबल 2, वेरी टेबल 2, टेबल 2 शायद यहाँ पर है, टेबल 2 यहाँ पर है। तो इसमें टेबल 2 में और जो वो वोल्टेज वेव फॉर्म आपको ड्रॉ करना है, करंट वेव फॉर्म ड्रॉ करना है अक्रॉस एंड वोल्टेज अक्रॉस द एससीआर। पहले तो आपको ये जो वोल्टेज है ना, ये जो लोड है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉ करना है एंड करंट ड्रॉ करना है। उसके बाद वोल्टेज अक्रॉस द SCR1, इस SCR1 के अक्रॉस कितने वोल्टेज है, एंड देन वोल्टेज अक्रॉस SCR2 आई थिंक, and the source current I1 and I2, and you also have to calculate this I1 current, how much this is, and I2 current this is. So it's simple. So the table is given to you. So based on this table, you can draw the output waveform. Plus, आप ये देखें plus plus दो दफा है, so its length is twice than this one. ये 0 है और प्लस प्लस दो दफा आ रहा है, तो हमने इसको डबल रखा है इसके हिसाब से। And then this is also double because 2 times minus voltage and then single times plus 0 voltage. Single time 0, half of this one. So this is the output voltage waveform. And here, why it will be plus 100? Because this is given plus 100. Because when this is on, तो जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज हैं वो ये वाले हैं। So all the voltage will appear across the load, and whatever be the voltage, that will be the load voltage. Means load is ये short हो गया, load is directly connected with supply. One terminal is connected with the plus supply, and the another connected with the negative supply. So the load is having the same voltage. So plus E. और यहाँ पर माइनस में माइनस ही हो जाएगा। And we have written the state 1, state 2. वन स्टेट में प्लस है, सेकंड स्टेट में भी प्लस है, ठीक। थर्ड स्टेट में आउटपुट 0 है, एंड द सेम थिंग वी हैव डन। सो फाइंड क्या करना है? फाइंड द एवरेज लोड करंट, फाइंड द एवरेज स्विच करंट, फाइंड द पावर डिलीवर्ड टू द लोड। Must have to mention these things at least, time period आपको पता होना चाहिए ताकि you should know from where is the start point and where is the end point of one cycle. And the things will repeat again, so don't need to write. I have drawn the circuit again because I need to draw first the waveforms. Output waveform तो ये है as per table, you know, ये इसमें SCR1 on है, कीप कंट्रोल क्यों भाई? नो, okay,
So on SCR1, SCR2 यहाँ पर ऑफ है. So this thing we have done before. Okay, something you need to write. If SCR1 is on, I1 flows and V output equals to plus A. अगर ये SCR1 ऑन है तो I1 फ्लो होगा और इसके क्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है वो प्लस हो जाएंगे. That's right. Similarly, if SCR1 is off, ये ऑफ है and SCR2 is on, ये ऑन है तो क्या होगा? Then output voltage will be minus as we have seen before. ये ऑन होगा तो ये माइनस हो जाएगा. Okay. V output will be 0 if current through the load is 0. Right? The SCR1. Now the time is to draw the voltage waveform across the SCR1. SCR1 के क्रॉस वोल्टेज वेवफॉर्म ड्रॉ करना है. How we can draw? Let's see. It's very simple. You don't have to confuse. SCR1 क्या एक स्विच है. जब स्विच ऑन होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज 0 होंगे. And when the switch is off, इसके क्रॉस सप्लाई वोल्टेज होंगे और मैक्सिमम वोल्टेज होंगे. This is the fact. You have to keep in mind while drawing the voltage waveform across the SCR1. अब SCR1 यहाँ पर हमने 0 लिखा है. इसके क्रॉस वोल्टेज ये SCR1 के क्रॉस इसके क्रॉस वोल्टेज 0 क्यों है? इस पीरियड में SCR1 ऑन है. जब SCR1 ऑन है, this is like शॉर्ट सर्किट. ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया ना. It's like शॉर्ट सर्किट. जब शॉर्ट सर्किट है तो यहाँ पर वोल्टेज 0 होंगे. नाउ फॉर द ऑफ पीरियड, वोल्टेज हमें पता करना है यहाँ के, और यहाँ के वोल्टेज कितने होंगे जब भी ऑफ होगा? Yes. So what will be the voltage when this SCR is off? जब SCR ऑफ है, ये SCR ऑफ है, दोनों ऑफ है. जब ये ऑफ है तो ये ओपन सर्किट है. इसका मतलब ये वाला टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? प्लस ई से, और ये वाला टर्मिनल माइनस ई से. जब ये ऑफ है तो इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस दिस विल बी मैक्सिमम और द सप्लाई वोल्टेज. So let's see what happened here. देखिए, जब ऑफ है इसके क्रॉस वोल्टेज प्लस ई आ जाएंगे, 100 वोल्ट हो जाएंगे. अच्छा, नेक्स्ट ये देखें. अब ये रिवर्स द स्विचिंग स्टेटस इज रिवर्स. SCR1 ऑफ हो गया और SCR2 ऑन हो गया. तो SCR1 ऑफ का मतलब क्या हो गया कि ये ऑफ हो गया, ये ठीक है, और SCR2 ऑन है. ऑन का मतलब ये क्या हो गया? दिस इज नो शॉर्ट सर्किट. यहाँ तक. अब आप लोगों में से कोई बताए कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट वोल्टेज? Okay, maybe because I have shown you already. So but the objective is to teach you very clearly. तो अब मैं इसको बताने के लिए देखें कंडीशन क्या है. हमें इस पॉइंट पे जब SCR2 ऑन है, आपने ये ड्रॉ कर दिया, और SCR1 ऑफ है, ये डिस्कनेक्टेड है, तो SCR1 के क्रॉस वोल्टेज मालूम करने हैं ना आपको. This is the voltage across the SCR1. So in order to understand better, you may draw an equivalent circuit. Let's suppose आप इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ. And this is your
दिस इज SCR, ऑफ है, SCR ऑफ है ये, और यहाँ पर ये SCR ऑन है। The SCR is on, सॉरी यहाँ पर क्या है, एक और बैटरी लगी हुई है, इसको थोड़ा सा मैं बेहतर कर दूं। Okay, so this is E, and this is also E. Means the first one is 100 volt and the second one is also 100 volt. अब कोई बताए कि यहाँ पर वोल्टेज कितने होंगे? We have drawn the equivalents. हमने ये लोड को डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि हमें तो सिर्फ इसके क्रॉस वोल्टेज पता करना है, ठीक है ना? Not across this one. And the current always find the easiest path. So the lowest resistance path is this one. तो यहाँ पर वोल्टेज कितने होंगे? This is simple 200 volt. 2E हो जाएंगे सर। 2E. That's simple 200 volt. यहाँ पर भी E, यहाँ पर भी. So that's why we have drawn here. इस वजह से SCR1 के क्रॉस वोल्टेज यहाँ पर this will be 2E. And the things will continue. So the first जो रैंप है, स्टेप है, नॉट रैंप, ये प्लस ही है। शुरू में SCR1 के क्रॉस वोल्टेज 0 होंगे क्योंकि ऑन है। जब ये ऑफ हो गया तो इसके क्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होंगे। मैक्सिमम मींस सप्लाई वोल्टेज, एंड दिस इज E। व्हेन दिस इज ऑन ऑफ एंड दिस इज ऑन, सो इसका मतलब ये कि अब ये जो है ना, ये इससे भी कनेक्ट हो रहा है और इस वाली सप्लाई से भी कनेक्ट हो रहा है। सो द बोथ द सप्लाई हैज टू बी एडेड। क्यों एडेड? तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस, सो एक बैटरी का प्लस दूसरी बैटरी का माइनस से कनेक्टेड है, सो इट मस्ट बी इन सीरीज। जब इन सीरीज में आ गए तो आउटपुट वोल्टेज विल बी 2E, so this will be 2E। अब इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। Up now we have drawn the SCR1 voltage. Now the time is to draw the SCR2 voltage. So the things looks like this one, but it will be in the opposite direction. For example, यहाँ पर SCR2 में मैक्सिमम वोल्टेज क्यों आ रहे हैं? 2E आ रहे हैं। Why it is 2E? चूंकि इस स्टेप में SCR1 ऑन है और SCR2 ऑफ है। जब ये ऑफ है और ये ऑन है, इसका मतलब है ये टर्मिनल इस ये ऑन होने की वजह से ये टर्मिनल इससे भी मिल रहा है और ये टर्मिनल इससे भी मिल रहा है, सो दिस वोल्टेज विल बी डबल। ठीक है, एंड इफ यू फॉलो the instructions I have explained for this one, you will see such type of graph. You can see this looks like whenever this is the lowest one, this will be the highest one. Whenever this one is the highest, this is one is the lowest. इन दोनों को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। Why this is maximum? क्योंकि यहाँ पर ये ऑन था और ये ऑफ था। Why this is यहाँ पर मिनिमम क्यों है? ये क्यों मिनिमम है? कोई बताएगा आप लोगों में से? SCR2 में ये वोल्टेज क्यों 0 है?
SCR2 सर ऑन हो गया। एग्जैक्टली, SCR2 ऑन है तो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है तो मैं वायर हो गया, वायर हो गया तो मैं इसके क्रॉस का मल्टीमीटर लगाऊंगा तो वोल्टेज विल बी जीरो। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आई होप कि मैंने इसमें इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन। हाउएवर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑफ कोर्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दिस टेक्स्ट इज रिटन व्हाटएवर आई एक्सप्लेन्ड यू फॉर दिस, द टेक्स्ट इज रिटन हियर। अच्छा, अब क्या करना है? The next is draw the question. In this question में it was asked in the question कि draw the current I1 equals to ISCR1। तो I1 में करंट उसी वक्त फ्लो होगा जब SCR1 ऑन होंगे। Just simple। या SCR1 में current will only flow through SCR1 when the SCR1 is on। So now you can see SCR1 यहाँ पर on है, इस पीरियड के लिए current is maximum, इसके बाद current will be zero and the next current will be maximum only when the second time the SCR1 will turn on। ठीक है, और ये करंट आप कैसे मेजर करेंगे? I is equal to V by R। वोल्टेज, इस पे वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, मैक्सिमम वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देंगे आप इस रेजिस्टर से। यू विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। सिमिलरली फॉर I SCR2, the current will only flow through SCR2 whenever it is turned on। ये टर्न ऑन SCR2 टर्न ऑन कहाँ हो रहा है? यहाँ SCR1 ऑन है, यहाँ SCR1 ऑन है, इस जगह पे SCR2 ऑन है, तो इस जगह पे सिर्फ करंट एग्जिस्ट करेगा। होप यू अंडरस्टैंड। एनी क्वेश्चन? सर ये VC SCR2 की जो वोल्टेज की जो वेवफॉर्म है वो दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हैं ना? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने एक्सप्लेन किया है वेरी in depth। I explain this one, इसे मैंने एक्सप्लेन किया। Now it's time to draw the voltage across the SCR2। फर्स्ट पहले आप एक माइंड बना लें कि मेक इट वेरी सिंपल। आप इसको इससे कंफ्यूज ना, आप ये बोलें कि यार SCR2 के वोल्टेज मालूम करने हैं। SCR2 इज अ स्विच, व्हेन द स्विच इज ऑन इसके क्रॉस वोल्टेज जीरो होंगे, व्हेन द स्विच इज ऑफ इसके क्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होंगे। दैट्स सिंपल। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर SCR1 ऑन है, इस जगह पे SCR1 ऑन है। जब SCR1 ऑन है और SCR2 ऑफ है, यहाँ पे SCR1 ऑन है और SCR2 ऑफ है, तो ऑफ होने का मतलब क्या हो गया? In order to explain this one, जब ये ऑफ है, जब ये ऑफ है इसके क्रॉस वोल्टेज में मैक्सिमम होना चाहिए +E, ठीक है ना? लेकिन अब ये सिर्फ +E से नहीं कनेक्टेड है, क्योंकि ये ऑफ है और ये ऑन है, तो ये ऑन है, सॉरी, इस स्टेटस में SCR1 ऑन है। आप ये लगा लें कि ये भाई SCR1 ऑन है, ठीक है। इस स्टेटस में SCR2 ऑफ है, SCR2 ऑफ है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर इसके क्रॉस वोल्टेज पता कर रहे हैं। So this terminal is connected with this supply via resistor, but this terminal is also connected, चूंकि शॉर्ट सर्किट है ये वायर है हो गया। दिस टर्मिनल इज कनेक्टेड, यहाँ से लेके ये किसके साथ कनेक्टेड है? इस सप्लाई के साथ कनेक्टेड। और इस SCR का ये वाला टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है? इसके साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब ये होगा, एंड दीज टू आर इन सीरीज।
तो यहाँ पर अब अगर वोल्टेज आप मेजर करेंगे इस जगह पे वोल्टेज आप चेक करेंगे तो आपको ये +2E नजर आएगा। That's why we have +2E। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाए। नेक्स्ट में दोनों SCR ऑफ हैं। What will happen? ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है। ये ऑफ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑफ है तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, ये ऑफ है यहाँ से भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। वोल्टेज जब ये ऑफ है तो वोल्टेज इसकी जो लूप बन रही है वो ये वाली बन रही है, सिंगल लूप। ये वाली नहीं बन रही। ये वाली लूप उस वक्त बनेगी डबल लूप जब ये ऑन होगा। ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, तो इसका अपना लूप सिर्फ ये है, इसकी क्रॉस वोल्टेज विल बी E। So now you can see the cross this one is E। फिर नेक्स्ट टाइम क्या है, अब इसमें अब उल्टा हो गया है। The SCR2 is on now and SCR1 is off। अब आप दोबारा देखें SCR2 ऑन है, ये वाली स्टेटस। इसको मैं थोड़ा सा सारी चीजें डिलीट कर दूं so that I can explain you। Okay। Now the time is to draw the SCR2 waveform when the SCR2 is on and SCR1 is off। जब ऑफ है तो आप इसको आप यहाँ पर से डिस्कनेक्ट करें। ठीक है, और ये क्या है, ऑन है। ऑन होने का मतलब क्या हो गया, दिस इज शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज इज जीरो। दैट्स वेरी इजी हियर। हमने कितना एक्सप्लेन किया, तो ये वोल्टेज यहाँ पे जीरो आ गए and the things will repeat again। इसमें क्या है, दोनों ऑफ है, दोनों ऑफ है तो आपके पास E वोल्टेज आएंगे। इसमें फिर वही सीन शुरू हो गया जो यहाँ पर सीन था। SCR1 ऑन है, एक ऑन है और एक ऑफ है, तो भाई जब एक तो ऑन है तो उससे तो दूसरी सप्लाई से भी कनेक्ट कर दिया ना आपको। अगर ये ऑन है तो ये इस सप्लाई से कनेक्ट हो रहा है, अगर ये ऑन है तो वोल्टेज विल बी डबल। सो हियर द वोल्टेज विल बी डबल। नाउ अगर अभी भी कोई एक्सप्लेन, अगर इफ यू नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन प्लीज लेट मी नो, और अगर क्लियर हो गया तो भी बता दें मुझे। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर है सर? जिसने क्वेश्चन किया था उसे क्लियर हो गया? यस सर। ओके, थैंक यू। इसी तरह से पूछ लिया करें, कोई भी प्रॉब्लम हो जिसे मैं स्किप कर रहा हूँ और यू वांट टू रिपीट इट, यस प्लीज लेट मी नो। ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर करंट। So let me ask someone to ये बताएं। आमना इमरान मोहम्मद अली, शारिक रहमान। आई हैव टू आस्क a few questions from you। शारिक रहमान नहीं है। अजीम आजम तालड़। जी सर। यस, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है आवाज, बिल्कुल सही है। अब आप ये बताएं, ये जो ये देखें, ये मेरा अगर कर्सर आपको नजर आ रहा है, दिस इज द करंट वेव फॉर्म है, वोल्टेज नहीं है। करंट वेव फॉर्म है, करंट थ्रू SCR1। जब ये SCR1 ऑन था तो करंट हमने मैक्सिमम शो किया है, मींस ये SCR1 ऑन है तो करंट आपके पास मैक्सिमम है। नेक्स्ट क्या होगा सर? ये ऑफ हो जाएगा ना? ये नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या होगा? ये जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा सर? क्योंकि सर SCR1 ऑन है, उसके बाद जब SCR1 ऑन होगा तो ही इसके करंट फ्लो होगा।
जब SCR1 ऑफ कर दिया है आपने तो क्या करंट फ्लो होगा? नहीं नो होगा। सर। इसका मतलब है कि द रेस्ट ऑफ द टाइम, ये पूरे टाइम पे करंट 0 रहेगा। अब दोबारा करंट कब ऑन होगा बताएं? जब SCR1 ऑन होगा सर। बिल्कुल सही है। तो दोबारा SCR ऑन, देखिए ये इस पॉइंट पे कहाँ से मेरा कर्सर, ये तो इस पॉइंट पे SCR1 दोबारा ऑन हो रहा है, तो ये इट्स वेरी सिंपल। ऑन। ओके, थैंक यू। इसी तरह से SCR2 में मैं किसी और से क्वेश्चन कर रहा हूँ। आफिया शाहिद, आफिया शाहिद, रेहान अहमद, यस सर। रेहान अहमद, ये बताएं कि यहाँ पर वेव फॉर्म किस पहली कौन सी वेव फॉर्म बनेगी? प्लस की बनेगी, माइनस बनेगी, जीरो में? ये SCR2 में पहले तो माइनस की बनी क्योंकि SCR2 ऑफ है। SCR2 ऑफ है तो जीरो बनेगी, ठीक है। तो यस कब तक ये जीरो रहेगी? जब तक ये ऑन नहीं हो जाती। जब तक ये ऑन ना हो जाए। अब नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर? ये अगर आप ऊपर चले जाए तो SCR2 ऑन है यहाँ पर, तो इसका मतलब इस पीरियड के लिए ऑन बिल्कुल सही है। वेरी मच। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज मुझे थोड़ा सा 2-3 मिनट का मुझे पॉज करना है। एक मिनट, आई थिंक देयर इज, जी बोले। सर ये जो वेव फॉर्म 2 से 3 पॉइंट है और 6 पॉइंट है जो ये वेव फॉर्म में, ये जो दो, केवल इसमें जो है दोनों SCR ऑफ है या फिर इसकी कंडीशन के दोनों हिसाब से? SCR ऑफ है, दोनों SCR ऑफ है। 3 वाला और 6 वाला कैसे आप चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे? यू हैव टू गो बैक टू दी, ये जो टेबल दिया हुआ है। 3 में देखें SCR1 ये भी ऑफ है, SCR2 भी ऑफ है, और इसी तरह से आपने पूछा 6 पॉइंट का, 6 पॉइंट में भी ये ऑफ है SCR1 और ये ऑफ है SCR2, राइट? ओके सर, थैंक यू। मैं देखता हूँ यहाँ पर कोई ऑप्शन मुझे नजर आया था कि हम इसे पॉज कर सकते हैं। ओके, पता शायद कोई, ओके नो सर नो होल्ड का ऑप्शन। होल्ड का, हाँ वही मैं देख रहा हूँ यार, होल्ड का ऑप्शन यहाँ तो नहीं है। सर वो जो 3 डॉट आ रहे हैं उसमें है। इसमें ऐड डिवाइस सेटिंग मीटिंग ऑप्शन, सर इसमें ही साइड होगा में क्या? 3 डॉट्स आ रहे होंगे उसके अंदर है। हाँ हाँ, फुल स्क्रीन अप्लाई बैकग्राउंड टर्न ऑफ। अच्छा अच्छा, डिवाइस सेटिंग तो नहीं होगा, मीटिंग ऑप्शन देख लेते हैं। मीटिंग ऑप्शन में भी नहीं है। ओके, आई थिंक मैं इतना टाइम जाए नहीं, वो मुझे पहले नजर आया था। ये क्या है? ब्रेक आउट रूम, व्हाट इज दिस? Okay, I will start a few minutes, 2 or 3 minutes after, and just stopping.